Early in 1911, under the auspices of Hadhrat Maulana Nuruddin Khalifatul Masih I, he founded the Anjumane Ansarullah, whose members were required to donate some of their time for religious service, propagation of Islam and Ahmadiyyat, and to promote mutual amity, love and universal fraternity. In September 1912, he travelled to Egypt, thence to Mecca, and performed the Hajj, and remained active in preaching Islam and Ahmadiyyat during his sojourn. In June 1913, he started the Al-Fazl, a newspaper for the Jamaat, in which, apart from the national news, educative, informative, historical, preaching and reformatory articles were published. In a very short time, this paper gained popularity, not only among Ahmadis, but amongst others as well. Later, it became a daily, and has been the official organ of the community since then. During the Khilafat of the Hadhrat Khalifatul Masih I, he went on a preaching tour of several Indian cities. Everyone benefited from his inspiring speeches. In November 1910, Hadhrat Khalifatul Masih I fell down while riding a pony and received serious injuries. في نوفمبر عام 1910 سقط حضرة الخليفة الأول المسيح الموعود عليه السلام من فوق ظهر فرس كان يمتطيه، وتأثر بجراح بالغة. بدأت تتدهور صحته بسرعة، وأحس أن قلبه أيضا أن هذه الوقعة أثرت على قلبه، وأحس أن أجله قد دنا واقترب. وهو في تلك الحالة وفي الليلة 19 صباح 20 من يناير قام بكتابة ملحوظة على قصاصة من الورق وطواها ووضعها في ظرف، ثم قام بكتابة سطرين على هذا الظرف، ثم وضعه في ظرف آخر، وتعهد هذا الظرف في عهدة الشيخ محمد تيمور. قال له الخليفة في حالة وفاتي يجب عليكم أن تتصرفوا حسب التعليمات الموجودة في داخل هذا الظرف. اتضح فيما بعد أنه كتب سطرين على الظرف، أحدهما كتب باللغة العربية وقال فيه حسب نموذج أبو بكر، وبالثاني باللغة الأردية وقال فيه بايع الشخص المسمى داخل الظرف. داخل الظرف كان هناك ورقة مكتوب عليها محمود أحمد. بعد ذلك تحسنت صحة حضرته واسترد الظرف من الشيخ محمد تيمور وقطع هذا الظرف. Hadhrat Khalifatul Masih I passed away on the 13th of March, 1914. It was a defining moment in the history of the Jamaat. On one hand, members were struck with grief by the death of the first Khalifa. On the other, they were faced with deadly intrigues from opponents of the institution of Khilafat. हुआ ये कि जो मौलवी मोहम्मद अली साहब थे और उनके बाद साथी, वो दरअसल खलीफतुल मसीह अव्वल के दौर में ही बाज़ साजिशों में मसरूफ़ थे कि आपके बाद आगे खिलाफत का सिलसिला न चले, और वो खुद अंजुमन के बाद अहम ओहदों पर फायज थे। अब ये बहुत बड़ा फितना था जमात की वहदत के लिए। उसी सिलसिले में हुजूर ने मौलवी मोहम्मद अली साहब से बराह रास्त भी बात की। मौलवी मोहम्मद अली साहब ने कहा कि जी देखें, बात यह है कि मशवरा होना चाहिए और जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कहने लगे कि 4-5 माह तक जमात इस बात पर गौर करे और फिर तबादला ख्यालात के बाद जो फैसला हो उस पर अमल किया जाए। Hazrat Muslim who was very much against this, and he pointed out the impracticality of such a course, that leaving a vital decision where a community required a guiding hand and a firm hand to guide it through trials and tribulations, to be left out for 4 to 5 months. He pointed out that it was wholly impractical,
and that the members needed to decide immediately as to who should be the Khalifa of that particular period. And as a Muslim, Anhu even said that anyone would be willing to pledge the oath of allegiance to anyone who would be put forward at that time, just for the unity of the community at that time. Later the same evening, Sahibzada Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad Sahib summoned 60 leading members of the community who were present in Qadian for consultation. After some discussion of the situation, it was unanimously agreed that before the interment of the Khalifatul Masih, his successor, who should command the obedience of the community, should be elected and should lead the funeral prayers of the deceased Khalifa and should arrange for his burial. हजरत मौलाना नूरुद्दीन की वफ़ात पर ये जो इख्तिलाफ था ये सामने आया और पता चला कि मौलाना साहब ने पहले से कोई ट्रैक्ट तैयार करके रखा हुआ था जिसमें उन्होंने अपने ख्यालात जो हैं वो बयान किए हुए थे और वो जमातों में पहले से भिजवाया था हजरत खलीफा अव्वल की ज़िंदगी में। तो ये अजीब बात है कि खलीफा अव्वल की ज़िंदगी में ही इस किस्म के ख्यालात को फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि जमात पहले ये फैसला कर चुकी थी और यही अंबिया का तरीक था, यही अलवसीयत में भी इसका जिक्र था कुदरत सानिया का, तो इसलिए जमात इस बात पे कायम हुई स्वाय चंद लोगों के कि हम में खलीफा मौजूद होना चाहिए। By midday on the 14th of March, more than 1,000 members of the movement had arrived in Qadian from outside. In the afternoon of that day, Sahibzada Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad Sahib held a consultation with the family members of the promised Messiah, peace be upon him, and their close relations, on the situation that confronted the movement.